गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग नव्या राज। और कौन कौन से लोग हैं जो जुड़ चुके हैं या kindly communicate the message। थोड़ी देर मैं इंतज़ार कर लूँ। अगर जुड़े हैं तो आप अपना मैसेज कर दें कि हम कंफर्म हो जाएं कि कुछ लोग आ चुके हैं। मेरी आवाज़ अगर पहुंच रही हो तो kindly confirm that कि I am audible for to you। मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप लोगों तक? आप लोगों तक मेरी आवाज़ जा रही है? आवाज़ पहुंच रही है वहाँ तक? आवाज़ जा रही है। तो टुडे आज समवन किसी ने मैसेज दिया था कि सर कुछ इंग्लिश और हिंदी को मिक्स करके बोलिए। तो मैं आज दोनों को ही मिक्स करके कोशिश कर रहा हूँ कि बोलूँ, आप लोग उस चीज़ को फॉलो करें। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे बातें करेंगे वो है न्यूट्रल थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन। यहाँ पे जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट जो बातें हैं वो हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन। तो मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन मीन्स द चेंजेस इन द न्यूक्लियोटाइडिक सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए। जो डीएनए है विकास के क्रम में, इवोल्यूशन के क्रम में, उसके न्यूक्लियोटाइड में जो चेंजेज आएगा उसे हम सामान्यतः मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन के अंतर्गत रखेंगे। फिर यहाँ पे एक आप लोग के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि सर ये तो कहीं भी इवोल्यूशन हो रहा है तो वहाँ पे उसके डीएनए में चेंजेज होगा, म्यूटेशनल चेंजेज होगा। और जब कोई भी म्यूटेशनल चेंजेज होगा तो वो उसमें मालिक उसके जो डीएनए के कंपोनेंट्स होंगे, न्यूक्लियोटाइडिक कंपोनेंट्स होंगे, उसमें चेंजेज आएगा और तब इवोल्यूशन होगा। तो फिर यहाँ पे न्यूट्रल म्यूटेशन का क्या मतलब है? हम लोग डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ चुके हैं और जो पॉलीमॉर्फिक नेचर हो रहा है, जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है, उसके कई कारण हैं। एक्सट्रेंजिक फैक्टर्स हमने पढ़ा, इंट्रेंजिक फैक्टर्स हमने पढ़ा। तो ये जो एक्सट्रेंजिक और इंट्रेंजिक फैक्टर्स हैं जिनके द्वारा डीएनए के सीक्वेंस में जो अंतर हो रहा है, ये म्यूटेशनल है और
कॉमनली ये जो म्यूटेशनल चेंजेस होता है और जो वेरिएशंस आ रहे हैं, फिनोटाइपिक वेरिएशंस जो आ रहे हैं पॉपुलेशन में, वो म्यूटेशन के चलते आ रहा है। और जब वेरिएशन डेवलप कर जाता है, जब वेरिएशन एग्जिस्ट कर जाता है, तो उस पर नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेटिव होता है। जैसे कि डार्विन ने जो कॉन्सेप्ट दिया था नेचुरल सिलेक्शन का, तो वहाँ पर जो इवोल्यूशन हो रहा है, वो इवोल्यूशन हो रहा है कि वेरिएशन इज selected by nature or rejected by nature. Then that means the evolutionary process is related to the process of natural selection. और यहीं पे एक बेसिक अंतर है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल थ्योरी। तो न्यूट्रल थ्योरी जो है वो बोलता है कि नहीं, द नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ऑपरेटिव इन वेरिएशन क्रिएटेड बाय द म्यूटेशन और जेनेटिक। तो अगर इसको हम न्यूट्रल थ्योरी को अगर हम देखें, तो न्यूट्रल थ्योरी बोलता है कि इट इज ऑफ मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन। ये क्या है? एक मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन है। दैट मीन्स द न्यूट्रल थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन suggests that most of the genetic variation in population is the result of mutation and genetic drift, not by the and not by the selection. So if you consider the theory, or according to this theory, if a population carries several different alleles, हमने आपको बोला था कि अगर कोई पॉपुलेशन में जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है, एंड इफ द नंबर ऑफ एलील्स आर मोर एट पर्टिकुलर लोकस, देन इट इज रेफर्ड एज मल्टी एलीलिक कैरेक्टर्स, एंड the extrinsic and intrinsic changes factors which are responsible for the development of polymorphic nature, gene polymorphism, then it develops. It is responsible for the creation of more and more alleles at particular locus. So here that the alleles provides the condition of variability among the in the population or within gene pool. So here the neutral theory, as we consider, according to the neutral theory, if a population carries several different alleles of a particular gene, variation is neutral, having alleles A or allele B does not affect the fitness, because in a number of last classes, I repeatedly told you
that the evolution is responsible for the development of survivalship fitness or reproductive fitness. That means fitness is an important conditions for the evolution. That means the evolution is responsible for the development of rate of fitness. And here, the neutral theory of molecular evolution is represented that if the number of alleles are, or if the large number of alleles are present in any gene pool, then the variation in is neutral. Here the variation is considered neutral when the nature of allele does not affect the fitness. Because if any one allele is present, but the allele has no role in the development or increase of the fitness, that means the fitness is constant. And if such type of molecular evolution is observed, then it is referred as neutral mutation, as suggested by the Kimura. The concept of neutral mutation was at first presented by Kimura. Kimura in 1968 states that the large amount of uh, fruit fly and human genetic polymorphism discovered by using protein gel electrophoresis inconsistent with the hypothesis that the natural polymorphisms are largely neutral. If you remember the multiple allele conditions of you studied in the condition of Drosophila, and likely the you observe the number of multiple alleles or genetic polymorphism in the human. In all conditions, the genetic gene form of genes are present in population. All are present or observed in the different lineage, but they have no role in the increase or decrease of the reproductive fitness. And if the forms of the allele has no role in the development or in the increase or decrease of the population of the fitness, then all the forms of gene or all the polymorphic forms developed by the molecular evolution are existed in the gene pool or preserved in the gene pool. Here, the all populations which you observe the allelic frequency in the Drosophila, or which we observe the allelic nature in the human being, all populations have genetic variation that may or may not affect the fitness of the organisms. And here, the neutral theory of molecular evolutions asserts only that observed amino acid substitution, because when the polymorphic nature is developed in the gene, then it is responsible for the changing of the nucleotidic sequence. But in spite of the change in the nucleotidic sequence, generally
the change in the form of amino acid is not observed. We all know that many amino acids have more than one genetic codes. That means the one amino acid is controlled by more than one genetic code. Here the amino acid is 20 and genetic code is 64. So except one or two amino acids, all amino acids have more than one genetic code. And if the nitrogenous, sorry, mutation is observed without the changes in any nature of the amino acid in the synthesized polypeptide chain, so molecular uh, changes is observed, molecular evolution is observed, form of allelic component is observed, but the nature of protein is similar. ये हम बोल रहे हैं कि अगर कोई एक चेंज कर रहा है, एक कोई न्यूक्लियोटाइड चेंज कर जा रहा है डीएनए का, लेकिन उसके जेनेटिक कोड जो पेरेंटल स्ट्रैंड में थे, ये पहले वाले एलील में थे, उसको तत्काल फॉर उसको समझने के लिए हम अगर वाइल्ड एलील बोल दें, अगर वो वाइल्ड एलील में थे और न्यू जो एलील डेवलप कर रहा है बाय द मॉलिकुलर इवोल्यूशन, उसमें वैसे न्यूक्लियोटाइड्स आ रहे हैं जो जिससे कि एमिनो एसिड का नेचर चेंज नहीं कर रहा है, तो मॉलिकुलर इवोल्यूशन चेंज होने के बावजूद उसके जो नेचर होंगे उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, यानी जो प्रोटीन है उसके नेचर सेम होंगे। और इस कंडीशन में जो उसके चेंजेज हैं या उसका जो इफ़ेक्ट फिटनेस पे होना चाहिए वैसा कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। सो द न्यूट्रल theory of molecular evolution asserts only that observed amino acid substitutions and polymorphisms are effectively neutral. Effectively, the changes is neutral, not that the loci involved are unimportant or that allele differences at those loci have no effect on fitness. तो here there is no effect of fitness, यहाँ पे इसका इफेक्ट नहीं होगा। Here I am रिप्रेजेंटिंग बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। अगर ये आपको इफ़ यू ऑल फील दैट इट इज़ गुड देन काइंडली इन्फॉर्म मी। आपको इंग्लिश हिंदी जो हम चेंज कर रहे हैं उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, क्योंकि कभी कभी लैंग्वेज जो चेंज हो रहा है तो उससे किसी को परेशानी तो नहीं हो रहा है। बिकॉज सम स्टूडेंट्स गिव मी मैसेज टू स्पीक इन हिंदी ऑल्सो। तो आज हम दोनों ही बातें बोल रहे हैं, इंग्लिश में भी बोल रहे हैं और हिंदी में भी बोल रहे हैं। अब यहाँ पे एक किसी ने बोला नो सर, बाकी किसी ने कुछ रिप्लाई ही नहीं दिया, क्योंकि लैंग्वेज चेंज होने में कहीं कहीं आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर होगा तो आप हमको बतला देंगे। अब यहाँ पे जो चेंजेस है, जो मॉलिकुलर इवोल्यूशन है, उसका फिटनेस पे कोई इफेक्ट नहीं है। अब अगर यहाँ बिकॉज द चेंजेस इन द जेनेटिक मटेरियल, यहाँ पे जो इवोल्यूशन हो रहा है और द इवोल्यूशन इन द मॉलिकुलर इवोल्यूशन ऑब्जर्व्ड इन एनी पॉपुलेशन, जो भी पॉपुलेशन में हो रहा है, इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द protein, and if the protein is not changed or
sometimes the amino acid is changed, but similar number of the similar natured amino acid is replaced, because we observe that the chemical nature of the amino acids are different. They are particularly divided into four groups: neutral, acidic, and basic. And again, the neutral amino acids are divided into polar neutral and a non-polar neutral. In these conditions, all these four types of the amino acids are arranged specifically or coded by the gene, and after the synthesis of the primary protein chain, polypeptide chain, they acquire a particular configuration, and that particular configuration of the protein is actually responsible for the biological activities. If if the molecular evolution is observed, but the molecular evolution is not has no effect on the amino acid change in the amino acid, or the nature of the amino acids, if replaced by the molecular evolution, then the configurational pattern of the polypeptide chain is same, and in this condition there is no differences in the biological property of the polypeptides or proteins. In this condition, because क्योंकि ये किसी भी बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स पे एक्शन नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो इसके जो इम्पैक्ट हैं फिटनेस पे, वहाँ पे कुछ होगा नहीं. एंड इन दिस कंडीशन all the polymorphic natures or the evolution, the molecular evolution is referred as the neutral mutation. Here it is referred as the neutral mutation. And the neutral theory or the neutral theory of molecular evolution was developed and proposed by M. Kimura in 1968. The concept was present in the 1968, and it is nowadays widely used in the study of the genetic polymorphism and the evolutionary concepts. Now, if you observe the evidences of the neutral theory, अगर हम डिफरेंट कंपोनेंट्स का पढ़ेंगे और किसी भी पॉपुलेशंस के एक कंटिन्यूअस मॉलिकुलर हिस्ट्री को पढ़ेंगे, उसके मॉलिकुलर इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हमको जो न्यूट्रल म्यूटेशंस, न्यूट्रल इवोल्यूशन, मॉलिकुलर इवोल्यूशन हो रहे हैं, या न्यूट्रल थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है, वो आपको कई जगह मिलता है. अगर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक कॉन्सेप्ट है मॉलिकुलर क्लॉक का, एंड द मॉलिकुलर clock based on the observations that the amino acid substitution rate per year for a protein is more or less constant across different evolutionary lineages. If you observe the changes, molecular evolutionary changes, and in the man, if you consider in the man, globally, we studied the allogenes, allogenes. There are number of allogenes are reported from the different populations from the different global regions, and in this condition,
the sequence of the ALU gene or ALU sequence in the human chromosome represents the na- nature of the molecular clock. That means the year back, billion years back, or years back, the sequence nature is constantly changed from a period, after a gap of the period of time. And in this condition, that particular molecular clock is very important to determine the migration of the homo groups from to different global regions. Because if the sequences which diverged before uh, 10 billion years before and present in the population of India and present also observed in the population of Sri Lanka, then it proves molecularly that the population present in India or any part of India or present in Sri Lanka are were common before 10,000, 10 billion years ago, and they splitted at that particular time. So, the study of a molecular clock is provided an evidence of the neutral theory because that or molecular evolution has no effect on the fitness. Second, the if you consider because the rate of neutral substitution equals the rate of neutral mutation, because if any uh, nucleotidic changes is observed at a particular time, then it represented the mutation, because without the mutation or without the point mutation it cannot possible to change the nucleotidic sequence from the DNA. So mutation is substitution, neutral substitution of any nucleotidic sequence is equal to the rate of neutral mutation. Here, the mutation is considered as neutral because the mutation has no role in the change, or mutation is not responsible for the change in the nature of the polypeptide chain. So, the neutral theory can explain the molecular clock phenomena if the neutral mutation rate is constant per year. In your syllabus, a topic molecular clock is also present. So here the neutral theory predicts that the evolutionary rate of a gene or a allele increase as its functional constituents reduces, because it reduces the functional constraint, means an increased function of neutral mutation. Because if a genome is present or a gene is present at any particular locus, but it is free, it has no strain, it has no constraint, it is normally moves from one to another generation from a longer time. So
the constraint, functional constraint becomes zero, or it is reduced in a particular environmental condition or in a particular geographical region. So the reduced functional constraint is responsible for the increase of the function of neutral mutations because it is relaxed. So some neutral mutations is observed. Here, the Kamura and Otoa, two scientists, Kamura and Ota, in 1974 shows that the functionally important and constrained histone H4. Remember, I am asking for the histone H4. It is an essential component of the nucleosome. And he observed that Kamura and Ota in 1974 shows that the functionally important and constrained histone H4 evolves much more slowly because it is conserving much more slowly than the functionally relatively unimportant and unconstrained fibrinopeptides consist with the prediction of the neutral theory because the constraint, if it is the constraint, then the mutational rate is decreased or evolution is slow. And if it is relaxed or unconstrained, then it represents or it predicted more neutral mutations. So it provides a example of the neutral mutation as well as the molecular clock. Likely synonymous sites, when the sites are synonymous, that is the genomic sites are synonymous to locus are synonymous, then synonymous sites are functionally less constrained. They are functionally less constrained than